देखिए, जो हमारे कोच हैं कृष्ण कुमार हुड्डा जी, उन्होंने काफ़ी प्लान करके काफ़ी मतलब स्टडीज करके कि इस चीज़ पे फोकस किया था कि कृष्ण ढूल को भी लिया है, विजय मलिक को भी लिया है, ऑलराउंडर है, डिफेंडर है, तो काफ़ी चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया है। और पर्सनली मेरा ओपिनियन तो ये है कि अब की बार टीम काफ़ी अच्छा करने वाली है। लास्ट टाइम कुछ चीज़ें थी जो मुझे भी खुद करनी पड़ी, डिफेंस में उतरना पड़ रहा था, एज ए रेडर में खेल रहा था, उसके बाद ऑलराउंडर मैंने ज्वाइन किया है। अदरवाइज़ अब की बार मुझे नीड नहीं, मुझे जिस हिसाब से मैंने कैंप 18 डेज़ मैंने कैंप किया है और मैं देख रहा हूँ पीकेएल का अपनी टीम का टेलुगु टाइटन का कैंप 18 दिन से, तो मुझे लग नहीं रहा इस सीजन मुझे कहीं डिफेंस करने की नीड है। सिर्फ मेरा एक ही जॉब रहेगा रेडिंग का, क्योंकि काफ़ी अच्छा काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। अब तक जितने सीजन में खेला हूँ सबसे, चाहे मैं बेंगलुरु बुल्स में खेला हूँ या गुजरात में खेला हूँ, मुझे लगता है कि अब की बार डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सब सीजनों से। जीत हार, देखो, जीत हार अपने हाथ में नहीं होता, अपने हाथ में है ना अच्छा गेम करना होता है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से मैं बेस्ट परफॉर्म करूँ और टीम का बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाऊँ। और अब की बार जो टीम मुझे नज़र आ रही है वो लग रही है कि कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर करेगी। मैं कप के लिए तो नहीं बोल सकता, लेकिन हम कप के लिए कोशिश पूरी करेंगे। इसमें तो थैंक्स टू पीकेएल एंड स्टार स्पोर्ट्स कि जो स्पोर्ट्स को इतना ग्लोबली ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है और वहाँ पे जाके हम एक मैच खेलने वाले हैं। वो डेट अनाउंसमेंट वो कभी भी बाद में हो सकती हैं, लेकिन वो अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है कि ग्लोबली फैल रही हैं चीज़ें। और जब बाहर की कंट्रियाँ गेम को खेलेंगे, गेम ओलंपिक स्पोर्ट्स भी बनेगा और गेम उतना ही बढ़ेगा। मैं जैसे अभी बताया कि मेरा रोल बिल्कुल क्लियर है। अब की बार कोच साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया और जो डिफेंस मैं देख भी रहा हूँ उस हिसाब से जो मुझे 18 दिन की प्रैक्टिस में नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि राइडिंग का ही है मेरा डिफेंस। उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया और जो दिख रहा है जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग डिफेंस खेल रहा है मेरा यूज़ पड़ेगा भी नहीं डिफेंस में, तो मैं डेफिनेटली 100% राइडिंग करने वाला हूँ। देखिए ना, कोच मोटिवेट करता है प्लेयर्स को। और जो कोच आए काफ़ी खुद भी मोटिवेट और प्लेयर को भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं। और एक इनका काम करने का तरीका काफ़ी अलग और थोड़ा बहुत सिमिलर रणधीर कोच साहब के, जैसे कि रणधीर कोच साहब थे उनके साथ मैंने काम किया था, बिल्कुल सिमिलर सा ही है लगभग लगभग। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। और ये एक दिन का भी टाइम पता नहीं कैसे निकाल के आया उनसे रिक्वेस्ट करके कि मुझे आने दो, नहीं तो उनकी प्रैक्टिस में मज़ा आ रखा और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। ग्लोबल ग्रोथ तो मैं लास्ट एशियन गेम में जो अभी खेल के आया था उसमें दिखा था। चाइनीज़ टैपी ने, लड़कियों की टीम ने इंडिया के साथ ड्रॉ मैच खेला था। और अब जो चाइनीज़ टैपी जैसी टीम, अब चाइना की टीम भी मेरे ख्याल से आने वाली है। यूएस के कुछ प्लेयर्स हैं कबड्डी। One of those things that we share most passionately is a love of sport. We love playing sport, participating in sport, watching sport, and that passion for sport is a great example of the strong bonds that Victoria and India have, those bonds that I'm building on as part of my visit to India this week. Also too, this week we've spoken about education, we've spoken about jobs and businesses opportunities. What I'm really pleased to be here this afternoon to talk about is how we're also going to strengthen those bonds of sport. The Pro Kabaddi League is one of the most exciting international leagues on the globe. Kabaddi is a huge sport, as we already know. Here in India, it's second only to cricket, which is certainly saying something in terms of the popularity of cricket. There's something like 365 million followers of the PKL. It's a league that's competitive, it's a league that is well supported by the Indian community, it's a league that's supported by a global community as well, which is why I'm really pleased to be able to announce today that the Victorian Government, through the great efforts of our team at Visit Victoria, the Victorian Government is going to be partnering with the Pro Kabaddi League to bring a kabaddi match to Victoria, to Melbourne in the coming months. And this is going to be a wonderful opportunity to showcase this fast, exciting, powerful sport to a new audience in Melbourne. But also too, in that audience will be many Indian Victorians who will also be cheering on for their favourite superstars of the sport. And it's also going to put Melbourne on that international sporting map once again. Melbourne is the sporting capital of Australia. It's one of the great sporting cities of the world. We're the only city in the world to host both a tennis Grand Slam and also a MotoGP, a Moto Grand Prix. We are proud of that, but what we also do is look for opportunities at every turn to
to build on our international reputation as a global place for sports and events. And today's announcement of partnering with the Pro Kabaddi League is another example of that. This is a tremendously exciting sport. It's got tens of millions, hundreds of millions of followers here in India, and we are going to support the growth of the sport in Melbourne, in Victoria, and we're also too, as part of hosting a match in Melbourne, it's going to also further put more eyeballs on Victoria, give the opportunity to promote Melbourne and Victoria to the world. That match will be held in the coming months, with the details around venue availability and arrangements to be worked through. There is a window that's very attractive to all parties about when that event will be held. There's going to be a lot of activity around that December-January period, as there is every December-January period, as we have the Boxing Day Test, the Australian Open, and of course we head into the March period with hosting the Grand Prix. So we'll work on those details with our PKL partners and provide some further announcements in the coming months. This is an indoor, historically it was an outdoor sport, but it's in terms of the way that the league has lifted the opportunity for the sport to be showcased globally. It's an indoor sport, it's a sport that's played on an indoor court. So we have so many venues in Melbourne that are going to be very, very well suited for the game of kabaddi. We're blessed with choice. I think we could say we are blessed with choice in terms of the venues that we have in Melbourne, and that's some of the details that we will be working through.